instructions. Today we will talk about the topic that is instruction of 8086 microprocessor. In this video we will tell how many types of instructions which is supported to 8086, and or we can say that how many categories are there to support to distribute all the instruction which supports in the 8086 microprocessor. So first there are eight types of categories occurred in 8086, in which all the instructions are divided. First one is data transfer instruction. In this type of instruction, we transfer data from the source operand to the destination operand. As a name suggests that data is transferred from one location to another location, or one word to another word, or input to output. All these categories are present in this instruction type. Okay, in this instruction type, matlab data transfer instruction type, we divide all these instructions in further three to four categories. Number one, first category is instruction transfer to a word. That means if we transfer a word, only data which present in the register, and we transfer that register data into another register data or a stack. So that type of instructions are present in this category. Now first instruction is move. As we know, move instruction is already used in 8085, same as here. In move instruction, we copy the byte of data or a word from the provided source to the provided destination. Okay, that move instruction is similar as to 8085 microprocessor. Next one is p push. That instruction is used to put a word to a top of stack. Whenever the instruction which comes in our mind, that is push, so first thing which come in the mind after listening this push instruction is stack. So from with this instruction is used to put a data or a word to the top of the stack. Similarly, its reverse process occurred in the pop instruction. That pop instruction is this instruction is used as a to get a word from a top of the stack, which is provided in the location top of the stack to get in that given register which is provided in provided location. Okay, next is push A. That this is the different kind of instruction. This instruction is used to put all the register data into the stack. Next is a pop A. This A indicates that the given register which provide the given register. Okay, this instruction is used to get a word from the stack to all registers. Okay, next one is similar as to 8085, that is an exchange instruction. That instruction is used to exchange the data from two given location. Okay, these locations are any location. Okay, next one is xlat. That instruction, this is a special kind of instruction which is used to translate the lower byte of accumulated data. Okay, translate lower byte of accumulated data. Which kind of in which method we are translate using the table in the memory. Okay, this is the first kind of instruction. Second kind of instruction in this category is the instruction for input output. If we transfer or if we take input, or if we give output to the data, so we have used two instructions. First one is in, second one is out. In instruction is used to read a byte or a word from provided port to the accumulator. मतलब कि जो भी डेटा, एक बाइट ऑफ डेटा या वर्ड ऑफ डेटा हमें पोर्ट पे प्रोवाइड किया गया है, इनपुट पोर्ट कोई भी पोर्ट हो सकता है, उस पोर्ट पे जो भी डेटा प्रोवाइड किया गया है उसको हम एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट वन इज आउट इंस्ट्रक्शन. दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सेंड आउट, मतलब दिस इज द आउटपुट इंस्ट्रक्शन.
दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू सेंड आउट अ बाइट और अ वर्ड ऑफ डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर, मतलब इसमें जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इनका कि एक्यूमुलेटर में जो भी चीज़ हमारे पास आई है उसको हम उस गिवन पोर्ट जिसमें हमें प्रोवाइड करना वहाँ पे हम भेज देंगे. दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू प्रोवाइड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट टू आउटपुट पोर्ट और इन पोर्ट और आउटपुट. Okay, next category is instruction to transfer address. At that time, in the previous instructions, we have transfer the data from one location to another location, one register to another register, or input port. We have take input. We have take data from input port, and we have given the data from to output port. Okay, but in this category, we will use we will transfer the address. For this there are three types of instructions. First one is load effective data, that LEA. This instruction is used to load the address of operand, मतलब जहाँ पे भी हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसके एड्रेस को लोड करेगा जो कि और उसको प्रोवाइड कर देगा रजिस्टर में. Okay, next one is load DS register. This instruction is used to load a DS register, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो DS रजिस्टर में जो है उसमें जो लोड करता है उसको लोड करता है, मतलब उसमें जो भी डेटा पड़ा उसको लोड करता है और उसको प्रोवाइड कर देता है जो कि मेमोरी लोकेशन है. प्रोवाइड द रजिस्टर फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन, मतलब मेमोरी लोकेशन के रजिस्टर पे प्रोवाइड कर देता है. नेक्स्ट इज LES, जस्ट सिमिलर एज टू LDS. दिस इज यूज टू लोड द ES रजिस्टर और अदर प्रोवाइडेड रजिस्टर, मतलब यहाँ पे कोई भी जो भी रजिस्टर प्रोवाइड किया गया है उस रजिस्टर या ES रजिस्टर से लोड करता है डेटा फ्रॉम मेमोरी. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज द इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर फ्लैग रजिस्टर. अभी तक तो हमने क्या किया कि डेटा हमारा किसी रजिस्टर में पड़ा हुआ है या इनपुट से हमें उठाना है इस तरीके, या एड्रेस को हमें ट्रांसफर करना है. अब ये कैटेगरी है कि हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है, दैट इज अ फ्लैग रजिस्टर. इफ़ वी ट्रांसफर द डेटा ऑफ फ्लैग रजिस्टर टू द मेमोरी और फ्रॉम मेमोरी टू flag register, we have used 4 types of instruction, that is LAHF, LAF. This instruction is used to load, L for the load, load the register, load AH मतलब higher byte of accumulator register with low byte of flag register. ओके, क्या क्या है उसमें हमने इस इंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज़ किया, मतलब ये इंस्ट्रक्शन हमें क्या यूज़ किया कि ये जो है AH यानी हायर बाइट ऑफ मतलब अपर बाइट ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो डेटा है उसको लोड किया, और क्योंकि हम विद लो बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर, मतलब जो उसका सेकेंड पार्ट हाफ बाइट बचा हो उसमें हमने फ्लैग रजिस्टर के साथ इसको लोड कर लिया. ओके, SAF, SAHF, this instruction is used to store, as for the store the AH, similar AH register with the low byte of flag register. Okay, flag register is a 16-bit. We all know that in 8086 flag register is 16-bit. So lower byte of flag register and higher byte of accumulated register is when we use this type of data, then we will use this instruction. Okay, next is push F. This instruction is used to copy the flag at the top of the stack, and similar to pop F, this instruction is used to copy the word at the top of the stack to the flag register. Thank you.